Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to my platform. The name of this platform is Enchanted Learning Palace, where unlock your English potential at the Enchanted Learning Palace where words come to life. Let's begin. Welcome. Okay, first of all, I will introduce myself. My name is Shehbaz Ahmed. I'm doing my MPhil in English in linguistics from ISP University, and I'm also currently teaching in Britain International School System as an English teacher. And the course is designed for your enhancement in English language. So I'm gonna give the introduction about this. And the course is designed for both students and professionals as well, to help students professionals grow communication skills. You know very well, communication skills is very necessary in every part of the life. And wherever you go as a student or as a professional one for your interviews, communications is required everywhere. So you have a good command over your language speaking. Okay, and to able to speak and express fluently in English. Okay, I have decided that I will explain it in both languages, because some of my students said to me that they face difficulty during their listening, during their class. So that's why I decided that I will also give my lesson in Urdu as well. Okay, ये जो कोर्स है ये मैंने डिज़ाइन किया है प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। और इसमें स्टूडेंट्स के लिए बेहतरी के लिए ये बनाया गया है, और प्रोफेशनल्स के आमतौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बनाया गया है। कम्युनिकेशन स्किल्स में दो या दो से ज़्यादा स्पीकर्स होते हैं, जिसमें मज़ीद बातें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे हम अपने कोर्स में, कि एक जो होता है, एक स्पीकर को अपनी बात कितनी प्रिसाइजली इंग्लिश लैंग्वेज में उसने अपने आप को कन्वे करना है, अपना मैसेज दूसरे बंदे को। ठीक है, तो ये सारा कुछ था इसमें। अब आते हैं कोर्स एम्स पर एंड ऑब्जेक्टिव्स पर। टू अनेबल स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली, लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स, टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट डेवलपमेंट, vocabulary enhancement. So communication, it is very important. You should be able to communicate confidently wherever you go. Confidence is is most important during your speaking. If you have a confidence, you can speak very well. Okay, learning language skills. I will teach you in language skills. There are four language skills, you know very well: reading, writing, listening, and speaking. And I will also teach you how you can be fluent in English language, and how you can improve your pronunciation, and how you can develop your accent and vocabulary as well. तो इस कोर्स का एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है, इसका जो मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर इस काबिल बनाना है कि वो अपने आप को कम्युनिकेट कर सके कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी की किसी भी फील्ड के अंदर, ना सिर्फ लैंग्वेज की। ओके, और लैंग्वेज स्किल्स इसमें आपको सिखाई जाएगी, फ्लुएंट किस तरह बना जाता है, आप किस तरह बिला झिझक जो है वो अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हो, और आपने किस तरह अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है, अपने एक्सेंट को किस तरह डेवलप करना है, और वोकेबलरी किस तरह बढ़ानी है। ये सब सब कुछ मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। Okay. The main things which are included in this course is basic grammar, parts of speech, tenses, active, passive, narration, presentation skills, interview skills, construct of structure sentences, paragraph writing, future guidelines. Okay. In this course, I will guide you, I will teach you about the structures. I will not teach you the grammar sentence. I will just teach you the only those sentences which are necessary to speak wherever you go, in your interview, whenever you go, if you are going to give your presentation. And I will also teach you the skills for presentation, interview skills, construct how you can construct your structure in structure of sentences in your mind without any hesitation. And I will also teach you how you can write a better paragraph, and I will also give you some future guidelines. Okay, these are the things which are necessary to keep in mind. तो इस लेसन में मैं आपको ग्रामर के बारे में बताऊंगा, आप किस तरह अपनी स्पीच को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेंसेस को। और बेसिकली मेरा एम ये नहीं है कि आपको मैं ग्रामर पढ़ाने बैठ जाऊं, टेंसेस पढ़ाने बैठ जाऊं।
बेसिकली एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए ना हमें इन चीज़ों को नहीं सोचना पड़ता, हमें ना इन पर देना होता है, बस बस हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन ये नहीं है कि हम ना बोलते वक्त इन चीज़ों पर ध्यान दें, हमने बोलना है बस फ्लुएंटली, जो भी हमारे जहन में आए हमने उसको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा हमें आएगी, कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर हम प्रैक्टिस करें। मैं इसमें इस कोर्स में आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स बताऊंगा, इंटरव्यूज़ के बारे में बताऊंगा, कंस्ट्रक्ट आपको बताऊंगा किस तरह आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, paragraph writing or future guidelines as well. Okay, why English? Now I'm coming to the importance of English, why you are learning English language. Because it is an international and global language. It is spoken worldwide, confidence and high self-esteem. Okay, English is necessary for you, you know very well. English is spoken throughout the world, and wherever you go everything has been shifted into English language, and and your English is required in every field. So you should have a good command over your English language. If you have the good command, you can express yourself very well and open doors for more opportunities. If you have the good command over the English language, you will have good opportunities for your future as well. And it is also a official language of Pakistan, and academic and professional language as well. If you go for interview, you have the good communication skills, then you can express yourself, and it will give a good expression over your interviewer. He will think that this person has a good command over the language. तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना ये एक इंटरनेशनल और ग्लोबल लैंग्वेज है, और इससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकते होते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अगर हमें लेट्स सपोज अब्रॉड भी जाना पड़े, तो अगर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की कमांड होगी, नॉलेज होगा, तो हम कम्युनिकेट भी इफेक्टिवली कर पाएंगे और अपने मैसेज को कन्वे कर पाएंगे। Okay, I have included some activities in this course: TED Talks, listening and reviewing, monologues, dialogues, storytelling, mock speech sessions, presentations, and mock interviews. तो इस कोर्स में मैंने ये मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड की हैं जिससे कोर्स जो है थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा। मैंने चाहा कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ लेके जाऊँ ताकि वो बोर ना हो। ओके, टेड टॉक्स होगा, इसके अंदर ना प्रोफेशनल्स अपने रिव्यूज़ देते हैं, आपने उनको देखना होगा, उनको सुनना होगा। मोनोलॉग कहते हैं कि इसमें सिंगल पर्सन बोलता है, उसको बाकी सुनते हैं। डायलॉग वो होता है जिसमें दो लोग बोलते हैं। स्टोरी टेलिंग जो होता है, आपको एक स्टोरी बता दे दूंगा, या मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टोरी दिया करता हूँ, वो स्टोरी को पढ़ते हैं, फिर उसको अपने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। या फिर मैं इस तरह भी करता हूँ कि मैं उनको पूरी स्टोरी बताता हूँ, फिर वो उस स्टोरी को सुन के फिर मुझे बताते हैं अपने लफ्ज़ों में इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मॉक स्पीच सेशंस होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी, और मॉक इंटरव्यूज़ होंगे। इंटरव्यू भी ले सकता हूँ एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। ओके, ये आप लोगों का नहीं है क्लास कमेंसमेंट, बिकॉज आप लोग तो ऑनलाइन लर्नर है। ये जस्ट उन लोगों के लिए है जो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। मैंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ अलग से। ओके, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर वन सेल्फ। Introduction is the first impression. Okay, wherever you go, for your interview or for anything else, your introduction will give a positive or negative impact over your listener. So make sure you should have some positive thinking in your speaking, in during your conversation. If you keep these things in your mind, then you will leave a good impact over your listener. Stay calm and relaxed. Okay, don't get nervous, just convey your message whatever in your mind, and give some positive thinking to him. This thing is most important for you. Don't make it too long, crisp or short. Okay, whenever you are speaking you should use short sentences, so that's why you don't use some pause. Tell your name and your latest qualification and experiences, achievements if any, and don't talk about personal family details. Okay, wherever you go for your interview, don't share your personal information, because they are not there for listening your personal family details. They are just there for hiring you, or so you should give that information which is necessary. तो जब आप जाएँ इंट्रोड्यूस आप करवाने लगे, तो आपने अपना पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा देना है। आपने हमेशा पॉजिटिव लफ्ज़ों में बताना है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी जा रहे हैं, तब भी आपने पॉजिटिव अपने उसमें बताना है, और आपने बिल्कुल ही
पुरसकून रहना है, दिमाग को ऊपर हैवी नहीं करना, और आपने ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेस नहीं बोलने, आपने शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने हैं। आप अपना नाम बताइएगा, अपनी क्वालिफिकेशन बताइएगा, अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा, और अपनी अचीवमेंट। अचीवमेंट होता है कोई भी आपने विक्ट्री ज़िंदगी में हासिल की हो, तो आपने वो बताना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स अपनी फैमिली की नहीं बतानी, जैसा अपने काम से रिलेटेड रहना है। ओके, नाउ आई हैव प्लान्ड एन एक्टिविटी फॉर माई स्टूडेंट्स, एंड दे इंट्रोड्यूस themselves according to this activity. And thank you very much. This is for today. I will teach you more things about my coming lectures, in my coming lectures. So thank you very much for listening me. Allah Hafiz.